Just waiting for the connection to get a little better. There seems to be some kind of a lag और उस चीज़ को मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ. So happy Sunday guys. I hope everybody is doing well. We still have fewer than expected viewers right now. So I just quickly want to tell you what happened over the past 1 week. बर्थडे वीक रहा सो मैं लाइव नहीं आ सका एंड इसी चक्कर में थोड़ा सा बिज़ी रहा काम पर भी एंड द कंसल्टेशंस हैव पिक्ड अप अ लिटिल बिट. फेस्टिवल इफेक्ट रहा बीच में और उस टाइम पे पेशेंट थोड़ा सा कम हो गए थे एंड राइट नाउ इट्स गॉट अ लिटिल बेटर. आज कुछ चीज़ें बात करेंगे बट उस सारे टॉपिक्स में मुझे लगा सबसे अप्रोप्रिएट होगा नो अतुल सुभाष का केस जो हुआ है और पर्टिकुलरली वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विथ हिम बट स्पेसिफिकली हिज लेटर टू हिज 4-year old son जो which really caught my eye. Now I want to show you quickly. Hang on, just loading it up right here. I hope you can see it on your screen. A second. Seems to be a problem. Right now, can you see on your screen? I hope you can. Or, one second, guys. Yeah. So, I started saving for your car, says Atul Subhash in his letter to 4-year-old son. बहुत ही हार्ट रेंचिंग स्टोरी. जस्ट वांट click this out. यहाँ पर son, when I first saw you I thought that I could give my life for you any day, but sadly I'm giving my life because of you. I don't even remember your face till now. I see pictures of you when you were 1 year old. I don't feel anything about you now except a tinge of pain sometimes. Now you just feel like a blackmail using which I will be extorted more and more. Though it would hurt you, the truth is that now you will feel like a mistake I made. Atul wrote in a letter in which he detailed how his wife and her family were allegedly using his son to extort money from him. So, इस चीज़ से द लर्निंग आई फील इज़ दैट कोई भी शादी में लोग जब you enter a marriage, it is very important to make the call if you want to have children. प्लान तो किया आपने, सब कुछ देख लिया, लेकिन you really overlooked a few things. I feel sad for Atul's case because he was particularly naive, I feel, in this matter. उस बंदे को पता नहीं था कि what was coming and what was headed his way, and he paid the price for it. I mean, early symptoms दिख जाती है आपके partner में if the person is narcissistic, if the person is having any kind of toxic traits, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक जनरल फील मिल जाता है शुरू वाले डेज़ में. So guys, guy to guy talk. Don't feel pressurized in any relationship. If you're seeing someone, take some time, discuss that you would need some time before you enter a relationship. किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, and especially if you're married, just take time before you have children. मैं किस हैसियत से बोल रहा हूँ, don't have to listen to me, but यार, as you grow you have certain learnings in life. तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि if you overlook a few red flags, those red flags can become a disaster later down the lane. So Atul paid the price for it. So that's one of the things, guys. I mean, a lot of learning there. Very sad again. And right now we are learning that she has also filed certain cases of maintenance to extract some maintenance for her son from the guy's father. Now, legally speaking, those are all possibilities. So there is really, emotions do not have any place in the courts. आपकी भावनाएं, these are all
that are very much restricted to your social circles and your family and relatives. But when it goes to the court, nobody gives a shit. I mean, that's how it is. It's sad, but it is true. Moving ahead, कुछ इससे हटकर हम कुछ लेसर सीरियस थिंग्स वी वुड सी. दिलजीत का एक टूर हो रहा है इंडिया में, एंड काफ़ी सारा पैसा बना रहा है बंदा, छाप रहा है. तो उसकी कलेक्शंस दोस्तों हैव गॉन थ्रू द रूफ. कितना पैसा लेता है? जस्ट वांटेड टू, आई वाज रियली क्यूरियस कितना पैसा बनाता होगा दिलजीत अपने एक एक शो से. अब अगर आप देखोगे, एक एक वीआईपी टिकट आपकी 50,000 से 1 लाख तक जा रही थी ऑनलाइन. वी हाउ एवर डू नॉट नो हाउ मच ही वॉज एक्चुअली मेकिंग. आई मीन अंडर द टेबल भी बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं, अंडर द radar of social media or the things that we actually do not know what's happening. So वहाँ से भी बहुत सारा पैसा बनता है इतनी सारी जगहों पे. आई मीन regardless, you might like the guy, you might not like the guy, but he is talented, he is making money, and he has broken so many records. और इंडिया एक इकोसिस्टम बन गया है दोस्तों. आई फील इंडिया में हर किसी को आना है, यहाँ पर अपना धंधा करना है, एंड वाई नॉट. आई मीन देर आर 1.3 1.4 बिलियन पीपल, एंड देर आर फैंस फॉर एवरी वन. सो एक नया मार्केट खुल गया इंडिया में टू डू मैनी ऑफ दीज शोज. ब्रायन एडम्स का हुआ है. द गाय हैज़ बिन आउट फ्रॉम लाइमलाइट, बट ही हैज़ मेड good success in India. 90s के लोगों, 80s, when you go back to 80s, those were his days when he was really trending. और वो सारा crowd निकल आया, and मुझे भी जाना था, but I somehow felt it was a little overpriced for somebody like Brian Adams. So I kind of sat back on that one. मैंने सोचा कुछ और करते हैं इसी इन्वेस्टमेंट से. You have to be a little logical when you're paying that kind of money, 20,000 whatever. So anyway, going forward, Brian Adams, you have the Illuminati, or Pushpa 2, guys. Pushpa 2 ke, when you look at the collections, are through the roof. अगर आप देखोगे यहाँ, ये पुष्पा के कलेक्शंस है बाय द वे. पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18, दैट इज़ आज संडे है तो आज इंक्लूडेड. तो अगर आप देखोगे पहले ओपनिंग डेज, फर्स्ट थर्सडे वाज 164 crores. दैट वाज एकदम T20 मोड में यहाँ पर पैसा बनाया पहले एक हफ्ते में. 141, 164, 119. देन गोइंग फॉरवर्ड एक और बम्प मिला उन्हें सेकंड संडे, जब 76 crores मिले थे. अब नाउ वी आर एट थर्ड संडे विच इज़ गोइंग ए लिटिल लो. ऑफ कोर्स दिस इज़ द थर्ड वीक, और थर्ड वीक के लिए भी काफ़ी अच्छा है इसका परफॉर्मेंस. देखो सैटरडे 25 crores, but the total, guys, it has touched a 1,000 crore club. Pushpa 2 has absolutely killed it. Killed it, guys. ख़त्म एकदम चपेड़ मार दिया है बाकी सारी मूवीज़ को इस साल, और बहुत अच्छा कर रहा है. So I'm glad movies are doing well from Telugu film industry, which is nice. A new ecosystem has taken birth. It was always there, but अब जाके तेलुगु इंडस्ट्री इज़ क्रशिंग बॉलीवुड. क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली वही एक नैरेटिव पे मूवी बनाते रहेंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप ऑफ मूवीज़ वेयर वेरी फ्यू पीपल रिलेट टू योर मूवीज़, जबकि एक करोड़पति है, एक बहुत ही गरीब लड़का है, बोथ ऑफ देम स्टडिंग इन अ कॉलेज, एंड दैट्स द कॉमन गरम मसाला दैट वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब शायद कुछ लर्निंग है बॉलीवुड के लिए. देर आर लर्निंग हाउ टू मेक मूवीज़ बेटर, एंड सो दैट कॉमन मैन गेट्स कनेक्टेड टू दोज मूवीज़, है ना. पीपल लाइक यू एंड आई, how do we feel? We like to put ourselves in the shoes of the lead or somebody, one character you pick and you feel like, okay, I am relating to this person. बहुत सारी करण जौहर टाइप ऑफ मूवीज़ में यू डोंट फील लाइक फिटिंग इन टू एनी ऑफ दोस. इतना अनरियलिस्टिक, इतना अजीब, इट्स ऑल लाइक वेरी फेरी टेलिश kind of garbage that was being flung at our faces, but that got rejected mass में. अच्छा है, fortunately people are saying enough is enough, we don't like your trash, we like more realistic movies. जो मलयालम इंडस्ट्री
Telugu industry, Kannada industry में आ रही है, which is very nice, which is very refreshing. Some of the smaller independent movie makers are also making some really good movies compared to Bollywood. So I'm glad for that. I think Bollywood should also step up and get some real talent, get some fresh legs into the industry. वही पुराने लोगों को बिठाओगे, they lack that, they have a very linear mindset. Of course, I'm not an expert, but you see, you feel when you watch those movies that एक बहुत linear mindset है. वही चीज़ों को exploit करते करते ख़त्म हो चुका है. So I hope it gets improved in the coming days. और एक चीज़ दोस्तों, this is a good break in terms of innovation in medicine, कि यहाँ पर आप देखोगे कैंसर वैक्सीन निकल आया रशिया में. Russia, unlike America, guys, is a very free market, and they do not like to compromise their own people. US में there have been certain conspiracies where people have reported that uh, there were certain breakthroughs in cancer technology. Vaccine बनाने वाले scientists को ख़त्म कर दिया गया. They were just disappeared because it was an existential threat to the insurance companies. Insurance companies thrive on your illnesses. तो एक multi-billion-dollar industry है अमेरिका में, and if you come up with a vaccine that's going to finish up cancer, so you are looking at a $1 billion industry being wiped off from the most wealthiest country in the world. और ऐसा अगर कुछ आ गया तो दुकानें बंद हो जाएगी. तो ऐसे लोगों को उठा दिया गया. There's a lot of conspiracies, but of course we don't know what the reality is. बोला जा रहा है कि ऐसे ख़त्म कर दिया. But when it comes to Russia, they are immune to it. और यहाँ पर एक वैक्सीन डेवलप किया गया. इट्स बेस्ड ऑन mRNA टेक्नोलॉजी. नाउ दिस इज़ नॉट न्यू. ये रिसर्च बहुत पहले से चलता जा रहा है. नाउ व्हाट दे आर क्लेमिंग इज़ दैट अर्ली 2025 में लॉन्च करेंगे, पहले अपने खुद के लोगों के लिए. दे आर गोइंग टू डू इट फॉर फ्री ऑफ चार्ज. दिस इज़ very nice. This is where Russia really it shines and outshines, actually, I would say, when compared to the Western world. So you like this guy or not, but Putin is actually a person who has a soft side too. I mean, अगर उनके कुछ पुराने वीडियोस देखोगे, एक कुत्ते को किसी ने, एक ब्यूरोक्रेट ने उठा कर ले आया था, एंड Putin just got up from his chair and got the dog in his arms, held the dog in a way that it would not hurt the dog. तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कुछ लोगों में जो दिख जाता है आपको. और व्लादिमीर पुतिन said in a televised comments that we have come very close to the creation of so-called cancer vaccines and immunomodulatory drugs of a new generation. So mRNA technology, guys, क्या होता है basically? यू पुट इन अ वैक्सीन जो जाएगा आपके मज़ल में, इंट्रामस्कुलर, कोई भी मज़ल में दे देते हैं 1-2 ml. उस सेल्स में, मज़ल सेल्स में अंदर जाएगा और एक प्रोटीन क्रिएट होगा. इस प्रोटीन के अगेंस्ट योर बॉडी इज़ गोइंग टू क्रिएट एंटीबॉडीज़. होगा क्या, ये जो नए एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुए ना, दे विल गो एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स. हाउ डिड दे नो दैट दीज एंटीबॉडीज़ वुड टारगेट द कैंसर सेल्स? इसको रिवर्स मैपिंग किया गया. दे हैव टेकन द कैंसर सेल्स, पुट इट अंडर सर्टन लैब टेस्ट, जिससे पता चलता है कि उसके शेल पर कैसी कुछ चीज़ें हैं. दीज आर कॉल्ड एज एंटीजेंस. उस एंटीजेंस को एनकोड करके mRNA बनाया गया. जस्ट टू कट शॉर्ट, they have used cancer cells to develop a vaccine so that when it goes in your body, it already knows whom to fight. So cancer cells are very different from normal cells. तो इन सारी cancer cells को identify करके उसको ख़त्म कर देगा. So this is an mRNA technology. So this has been there in the market for a while, but अब बहुत ज़्यादा आगे निकल के आया है. So, guys, this was a quick roundup on certain things that have developed over the past 1 week. I'm really excited about the mRNA vaccine. I hope it gets opened up for the world, or maybe they wouldn't want to sell it outside. Medical tourism is always there. People can visit Moscow. Let's get a visa to go to Russia and come back. Why not?
It's very close, and we have an advantage that Russia is in good terms with India, and I hope that हमारे सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए भी एक होप निकल के आएगा. 2025 तक रुकना पड़ेगा. That will be the best New Year's gift for the world if this vaccine works out. It will change the way we will look at cancer going forward into the next century. And we can always tell our children that we were the first generation to have received a cancer vaccine that can kill cancer. I mean, cancer, yeah, it's such a serious thing. It's such a disastrous thing. People have, committed suicide when they've known that they've had cancer. So, ऐसी सारी बहुत, it's a very emotional rundown when you know that people have cancer. So, I hope this materializes in the way that we would want it to be, and let's hope for the best. So, guys, have a great Sunday. I will come back in another live stream very soon. Goodbye.